So today we will discuss frame of references. ठीक है. So there are two different types of frame of references. Two types of frame based on the acceleration of the frame. Two types. First is inertial frame. This is non-accelerated frame. ठीक है. Inertial frame, which is non-accelerated frame. And there is one more attribute to it. Laws of motion are applicable in it. ठीक है. Second frame is we have not learned it till now. So now second frame is non-inertial frame. This is accelerated frame, right? So in this, laws of motion are applicable only after certain amendments, or you can write changes in the free body diagram. ठीक है. Laws of motion are applicable only after certain changes in the free body diagram. ठीक है. Now, इनर्शियल फ्रेम क्या था? अभी तक जितने भी फ्रेम की आप बात कर रहे थे वो सारे इनर्शियल फ्रेम. वॉट एवर फ्रेम विच वी वर टॉकिंग अबाउट टिल नाउ, ऑल ऑफ दोज वेयर इनर्शियल फ्रेम. अरुणा, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा बेटा, अगर तुम्हारा नेटवर्क ठीक है. नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या है कि दीज आर एक्सिलरेटेड फ्रेम. सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. सो नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम का मतलब क्या हो सकता है? ईदर वेलोसिटी इज कांस्टेंट और जीरो. Either velocity is constant or zero. Accelerated frame में क्या है? Velocity is a variable. मतलब velocity हमेशा vary करती रहेगी, तभी accelerated होगा, right? So I'll give you some examples. Just pay attention. So talking about a tree, ठीक है? So this is a tree. So a tree will always be a tree. कैसा फ्रेम होगा बेटा? वृंदा जी बताइए, ट्री कैसा फ्रेम होगा बेटा? हेलो, सर इनर्शियल फ्रेम. हेलो. कौन बोल रहा है? हेलो वृंदा. तो ट्री कैसा फ्रेम होगा? ट्री विल बी ए inertial frame. ठीक है. So if you consider this to be a frame of reference, so this is an inertial frame because it is non-accelerated, right? Because it is non-accelerated. So this is a case of inertial frame, है ना? So कैसा फ्रेम है ये? This is inertial. Now
Now take a car. Now there are two different types of cars. Let's take a car. Let's take this blue car. So this is a car which is moving with a constant velocity, say 20 meters per second I cap. Okay. Now, now, so will this be an inertial frame or a non-inertial frame? Tell me. Arunab, tell me this is inertial frame or non-inertial frame? Non-inertial frames. Inertial frame. Very good. This is an inertial frame. दीव लेट क्यों हो गया बेटा? सर नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा, आज सब लोग लेट आए हैं भाई। मैं क्लास को पहले तुम मेरे को राकेश जी ने बोला था, राकेश मिश्रा सर टोल्ड मी कि ऑल ऑफ यू वांट टू हैव क्लास अ लिटिल बिफोर, little earlier. So I'm trying to shift the timing to 9 p.m. So आज that's why I shifted to 50, but shifted it by 15 minutes before. So please remember it from the next time onwards. We will have your class at around 9:95 because the first class finishes at the class before this finishes at around 9 p.m. So by 9:05 we will have this session. Okay. वो 10:30 तक बहुत लेट हो जा रहा था तुम लोग को, ऐसा मेरे को राकेश जी ने बोला, तभी मैंने चेंज किया. So now this car is moving with 20 meters per second I cap. It's a constant velocity. So this is a case of inertial frame of reference, right? Frame का मतलब क्या होता है बेटा? From where we observe. What is meaning of frame? Meaning of frame is from where we observe. So if an observer is sitting on this tree, okay, and he is observing whichever object he wants to observe, that is the case of, so that's why this frame will be an inertial frame. In this case, the observer is sitting inside this car. Okay. And he is observing it from here. Right? Suppose इसी को थोड़ा सा और बना लो. So this is a car. This car is moving with a speed of, not with a speed of, this car is accelerating at an acceleration of 2 meters per second square I cap. Now, which type of frame this car will be? This car will be a non-inertial frame of reference. Non-inertial frame. Yes or no? All of you. Understood? Yes, sir. Hello. Yes. Yes, sir. लिखो इसको जल्दी से. All of you write it. And then we will derive what are the changes. Then we will see what are the changes which should be done in the free body diagram. So this man is in non-inertial frame. ठीक है? लिखिए. Once you're done writing, type done in the comment window.
Done when you are done writing, okay? All of you do it quickly. भाई जल्दी लिखो फटाफट। 1 2 3 4। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। तक्ष तू लेट, तू इस बैच में क्यों आया वैसे? तूने बोला था क्या ज्वाइन करेगा तू? यस सर, यस सर। आई तो भाई फॉरगॉट। तू लेट क्यों आ रहा है तो तू? इट्स फ्रॉम 9:30 ना? मैंने ग्रुप में डाला 9:15। सर यू सेड 9:30 टू मी, मैसेज पे लिखा है 9:30 to 10:30 है। तुम ग्रुप में नहीं हो क्या? नो सर। हाँ ठीक। हाँ भाई, तो चलो लेट्स मूव अहेड विद दिस। सो हाउ, व्हाट इज द चेंज? लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस व्हिच नीड्स टू बी डन इन द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वृंदा जी बताइए, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सॉरी सर। तुम्हारी माइक को क्या हो गया बेटा? सर अब आवाज आ रहा है? आ रही आ रही आ रही, सॉरी। बोलो। सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मैंने कहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? Sir, it is basically the frame from where we observe the moving वेरी object. गुड, वेरी गुड। फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जो तुमने सिस्टम बनाया था ना, लॉज ऑफ मोशन में सिस्टम चूज करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इट्स अ फ्रेम फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द सिस्टम टू अप्लाई लॉज ऑफ मोशन। क्लियर? दीव, अरुणाब, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे आई, देखो मैं जो तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट वी आर डिराइविंग इट, राइट? हाउ दैट चेंज केम। फिर हम इसको वो करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, फिर मैं तुम्हें इसका इजी एप्लीकेशन सिखाऊंगा। ठीक है? ये भी इजी है, पर वो भी इजी होगा। तो यहाँ पे आई एम ड्रॉइंग 2 फ्रेम्स। देखो सर, ध्यान से सब लोग, हाँ। दो मैंने यहाँ पे प्लेन्स ड्रॉ कर ली। ठीक है? तो दिस इज अ ट्री। ये वाला जो फ्रेम है, यहाँ पर एक ट्री है।
So this is the tree which will be our, कौन सा फ्रेम होगा ये? इनर्शियल फ्रेम होगा, है ना? So this is our inertial frame of reference. इसमें लो सेब वेब भी टांग लो थोड़े से, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा फ्रेम हो गया? ये इनर्शियल फ्रेम हो गया, ठीक है? सो दिस इज inertial frame of reference. Let's call this frame as frame S naught. ठीक है? क्या नाम है इस फ्रेम का? फ्रेम का नाम है S naught. ठीक है? Then this is a new frame. नहीं, इसको लाल कलर, रेड कार अच्छी लगती है ना? रेड कार बनाएंगे इसे. So this is a car. So so this car is moving with a speed. This car is moving with a speed. Sorry, with an acceleration. Let's say the acceleration is a naught. ठीक है? And the frame is, let's call this frame as frame S. ठीक है? अब देखो, ध्यान से सुनना, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम मेरी बात पे फोकस करते रहो. ठीक है? Let's say this is a point, this is a particle P which you need to observe. ठीक है? So now let's draw the position vector. This is position vector of P with respect to S naught. Sorry, S. This is position vector of S with respect to S naught. And the last one is position vector of P with respect to S naught. I hope this is clear to all of you. Yes or no? Yes, sir. Any doubts? Any doubts in this? If you have, please ask. No, sir. Now, can I write using triangle law of addition of vectors? Can I write RSS naught plus RPS is equal to RPS naught? Can I write it like this? All of you, tell me. Yes, sir. Of course, I can write, right? Now, what about RPS? RPS can be written as RPS naught minus RSS naught. रिलेटिव मोशन में भी पढ़ा था ये तो, है ना? फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट के पोजीशन को सेम रेफरेंस पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मिलता है. पता है ना आप लोग को ये? हाँ ना, बोलिए प्लीज. Yes, sir. नाउ इफ आई डिफरेंशिएट इट, if I differentiate this R with respect to time, what do I get here? RPS naught minus RSS naught. What do I get? I get velocity. है ना? एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? Acceleration of particle P with respect to S is equal to acceleration of particle P with respect to S naught
minus acceleration of particle s with respect to s. This frame was a non-inertial frame, right? Now tell me, what is this? This is acceleration of p with respect to non-inertial frame. Yes or no? Hello? Yes, sir. This is acceleration of particle with respect to non-inertial frame, right? Acceleration of the particle with respect to the non-inertial frame. Clear? है ना? So how do I get it? What I am doing here is, this is acceleration of the particle with respect to inertial frame. This is acceleration of the particle acceleration of the particle with respect to the inertial frame, right? Acceleration of the particle with respect to the inertial frame. What is this acceleration? This is acceleration of non-inertial frame. Acceleration of non-inertial frame with respect to the inertial frame. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Now, अरे भाई किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं पढ़ाता जाऊंगा. मास इसका m है मान. Now what I do here is, APS is equal to mass into APS naught माइनस, इसको यहां प्लस लिख लो, सॉरी, प्लस m इंटू माइनस ASS नॉट डिवाइडेड बाई m कर लो इसको. ठीक है? ये क्या है? दिस इज द नेट फोर्स acting on the particle from inertial frame of reference. Yes or no? जब फ्री बॉडी तुम ड्रॉ करते थे, तो दिस इज व्हाट यू यूज टू कैलकुलेट. यस और नो? Yes, sir. When you used to draw the free body diagram, this was the force which you used to write. है ना? सब लोग हाँ ना बोलेंगे भाई. समझ आ रहा नहीं आ रहा? अरुणाभ, सुकृता, Yes, sir. Yes. दिव्यांश Yes, पांडे, sir. तक्ष, वृंदा. Yes, sir. Okay. Now you have added another force here. This is a force. This is a force. This negative sign indicates that the direction of this force is opposite to the acceleration of non-inertial frame. So I will write it here. This negative sign indicates that the direction of the force is opposite to the acceleration of the non-inertial frame. This is the force. Now, this force is actually not acting on the object. It is there because we multiplied mass to this acceleration, right? So since this is not an actual force, this force has a new name here. Pseudo force. रुक जा भाई, रुक जा. This name, the force is called as pseudo force. Right? What is pseudo force? It actually does not act on the particle, but we have to bring in that force in the free body diagram, right?
when we observe the particle from non-inertial frame of reference. A force, a force brought in the free body diagram when we observe the particle from a non-inertial frame of reference. क्लियर है सबको? ये हाँ ना बोलिए. Yes, sir. What is magnitude? What is the magnitude of this force? So I'll write it here only. Magnitude of pseudo forces equal to mass of the object observed multiplied by acceleration of non-inertial frame of reference. ये होगा. समझ आया आप लोग को कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Magnitude of the pseudo forces the mass of the particle multiplied by the acceleration of non-inertial frame of reference. इसको एक बार ना पढ़ लो तुम अच्छे से. ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ो. कोई डाउट आता है तो पूछो. एंड इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स देन स्टार्ट राइटिंग. ठीक है. Sir. So I forgot. So when do you, how do you identify if the force is pseudo force? Like when you're writing it, how do you know that this is the pseudo force? बेटा इसीलिए पहले आना था क्लास. क्यों आना था पहले? तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुमको इसलिए बता भी देता हूँ. यहाँ पे जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तभी सूडो फोर्स आएगा. Okay. जब भी तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे ना हाँ. तभी सूडो फोर्स आएगा. Okay. ठीक है. Hmm. This is acceleration of non-inertial frame. एक बार रीड करो इसको. अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो वी विल मूव अहेड. ठीक है. यू विल राइट इट, मेक नोट्स एंड देन वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस. ठीक है, करिए. सायन आया क्या? सायन पाल.
भाई लिख के हो जाए तो प्लीज टाइप डन इन द कमेंट विंडो, ऑल ऑफ डू इट क्विकली. Done, sir.
प्लीज डू इट क्विकली. ओनली वृंदा, दीव, बाकी सब नहीं क्या कर सर। रहे हैं भाई? ऑल ऑफ यू राइट इट क्विकली. अरुणाभ, सुकृता, दिव्यांश. चलो. So I hope all of you have noted it. So let's move ahead and see the application of this. Okay. Very simple application. So just revise this. Negative sign indicates that the direction of the force is opposite to the acceleration of the non-inertial frame. Number one, direction of the acceleration is opposite to the direction of acceleration of non-inertial frame, and magnitude is m into a. ठीक है? Acceleration of non-inertial. So here I have kept a box inside the elevator, right? And the man is standing inside the elevator. So this is a person A standing inside the elevator, and this is person B who is standing on the ground. Mass of the block is capital small m. Elevator is moving up with an acceleration A. Elevator is moving up with an acceleration A. Now tell me, all of you in the chat window, write it. Which one of these two is inertial, which is non-inertial? Type it in the chat window. All of you, do it quickly. Which one is inertial, which one is non-inertial? Write in chat window, quickly. अरे बी क्या है? दीव, उसके सामने लिखो बी इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ए इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल. ऑल ऑफ यू राइट इट क्विकली. टाइप इट. अरे आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. अबे लिखो ना. दिव्यांश पांडे, तुम क्यों बैठे हो क्लास में भाई? जवाब दो. ना कैमरा ऑन है, ना माइक, ना हूं ना हाँ. क्यों बैठे हो बेटा क्लास में? सर सॉल्व करो एक बी इज इनर्शियल. सिंपल है, मतलब एक्सेलरेटेड नहीं है तो इनर्शियल, एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो नॉन इनर्शियल. सो ए इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, बी इज इन द इनर्शियल. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज find the force exerted, find the force exerted by the floor of the elevator on the block. ये निकालना है. ठीक है, निकालते हैं, आइए. So first I will draw with respect to inertial frame. So with respect to B, I am drawing the free body diagram with respect to B. All of you please pay attention. कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे कुछ क्या करना है, ब्लॉक लाना है, यहाँ लगा देना है. ठीक है. दिस इज मास m, weight mg downwards, normal reaction n upwards. Are there any other forces acting here, acting on the block? All of you. Is there any other force acting on the block? Hello? अरे तुम लोग, मैं पूछना छोड़ दूंगा, तुम्हारी दिक्कत बढ़ जाएगी. पूछ रहा हूं तो जवाब दो. वृंदा शर्मा,
यहाँ पे कोई और फोर्स लग रहा है? हेलो तक्ष, इज देयर एनी अदर फोर्स एक्टिंग हियर Yes, sir. ऑन द Pseudo ब्लॉक? force. Pseudo force. अच्छा ये बताओ, बी इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम? B is inertial frame. तो इनर्शियल में लगता है सूडो फोर्स की नॉन इनर्शियल में लगता है तक्ष? A non-inertial, sir. तो ये इसमें लगेगा क्या? Block is an A. We are observing from inertial. ऑब्जर्वर के हिसाब से सूडो फोर्स लगता है। ठीक Oh, है, okay, okay. ठीक है। Yes, sir. We've understood or not? Yes, sir. So with respect to B, block is moving upwards. So net force upwards is N minus mg is equal to mass into acceleration. So N is equal to m into g plus a. This is the force experienced by the block by the block because of the elevator. ठीक है? So now our objective was to find it with respect to what is the change which we have to make in A when we observe it from A. ठीक है? So this is non-inertial frame. Just pay attention, all of you. So we are observing this block from non-inertial frame. So these forces will remain as it is because they are real forces, right? They will always act on the block. Whether it's inertial or non-inertial frame, these forces will always be there. But now there is a change. With respect to A, when this man observes this block, is this block accelerated? Yes or no? With respect to this man, as observed by this man, will this block seems to be accelerated? Yes or no? No, sir. No, because it is at rest. It will always be there in front of it, right? आप खुद को देखो, खुद चले जाओ एलिवेटर में एंड ब्लॉक को सामने रखो। ब्लॉक जो तुम्हारे सामने रखा है वो ऊपर उड़ रहा है क्या? तो एलिवेटर के साथ ही साथ आएगा ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज at rest, right? Now, what is the direction of pseudo force? एक मिनट रुको जरा। दिव्यांश पांडे बताइए, डायरेक्शन ऑफ pseudo force क्या होता है? अब आवाज नहीं आई। आ रही है? बोल रहा है तो कुछ। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आई बेटा, बोलो। सर क्वेश्चन क्या था, रिपीट कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ pseudo force। सर अपोजिट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो कहाँ होगा इस केस में, कहाँ होगा बताओ? सर नीचे के साथ। ऑब्वियसली नीचे। वेरी गुड। सो डाउनवर्ड्स। ठीक है, दिस इज मास इनटू एक्सीलरेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। नाउ दिस ऑब्जेक्ट with respect to inertial frame, non-inertial frame has acceleration 0. So now if you write force equation, N minus mg minus ma is equal to mass into 0, which is 0. So from here we get N is equal to m times g plus a. I hope this is clear to all of you. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। So this is how Yes. we use pseudo force. Okay? When we observe the particle from a non-inertial frame of reference. Please make notes. This is one example of, okay? Next class में we will be solving it will be a problem solving session for laws of motion. ठीक है? तुम्हारी कुल 4 क्लासेस खराब हुई हैं पिछले दिनों में, 4 क्लासेस। ठीक है? तो now there will not be no more cancellations. So we will, and in fact I will try some more classes, extra classes,
so that we can finish it quickly. Sir, can you please repeat what we will do in the next class? Problem solving of laws of motion. So please practice all the problems of H.C. Verma. We will solve some more different problems in the next session, okay, including the application of laws of pseudo forces. Okay, sir. Done, sir. So if you are done with this, if you are done with this, there is a homework. I'm giving you one question homework. Please do it. Please do it in your homework as a homework, right? And send it to me before next session. ठीक है भाई? So this is a card. So this is a card, and the cart is moving with an acceleration a naught. The car is moving with an acceleration a. A pendulum is hanging from the cart, and this is how it makes an angle, some angle with the equilibrium. Sorry, at the equilibrium. This angle we are not aware of. The acceleration of the cart is a. Mass of the ball is m. Bob is m. Length of the string is L, right? You have to find what is the angle which the bob makes in equilibrium and also the tension in the string. This is your homework for next. Before attending next session, send this homework to me and practice all the questions from H.C. Verma. Laws of motion is completed today. Next class, we will do an exclusive problem solving session in laws of motion on Sunday, right? Sunday is your day, right? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So please, I think Sunday's class is at 8 p.m. I think. Yes, sir. Okay, good. Great. So let's meet at 8 p.m. on Sunday. But before that, you have to send me by tomorrow. Send this question by tomorrow. Okay. So the question is, find the angle which the pendulum makes with the vertical in equilibrium. दूसरा है find the tension in the string.
ठीक है, प्लीज डू दिस। चलिए, Sir, 1 second. हाँ बोलो। No, no, I'm writing. ये कल तक भेजना है मुझे, कल तक आप लोग भेजेंगे शाम से पहले, ठीक है? So can you please show the previous slide for reference? ये स्क्रीनशॉट ले लो Yes. इसका जल्दी से। Done, sir. Thank you, sir. चलिए लिखिए, ठीक है? Sir, can you add me in the group so if I know there's a change in timing? आइला, Okay. तेरा कंस्ट्रेंट वाला चैलेंज हो गया था कि नहीं, बताओ। Mine, sir? हाँ। No, sir, no, sir. You said you'll do it. अबे पिछली क्लास में इसी बैच में तो कंस्ट्रेंट पढ़ाया था, तू कहाँ था? I wasn't there, sir. I told I'll join. I wasn't there. ठीक है, तो तुमको एक दिन कंस्ट्रेंट पढ़ाते हैं, रुको जरा। Yes, sir. Sir, video. ठीक है, Okay, sir. चलो, Okay. बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Thank you. Good night.